Welcome to MascotIT Solutions. Like in the previous video, we saw in detail the leave option under Human Resource section in MascotEdu ERP system. In this video, we will explore award option. Using this, you can give appreciation awards to students, teachers, other staffs, etc. for their good work and keep a record here. Click on Award. Here you can see award list with all the details in the table format. अगर आप कोई डिटेल एडिट या डिलीट करना चाहते हो तो क्लिक ऑन एडिट आइकॉन इन द एक्शन कॉलम. मेक चेंजेस यू वांट टू एंड देन क्लिक ऑन अपडेट बटन टू सेव द चेंजेस. न्यू अवार्ड क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन गिव अवार्ड बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर. चूज ब्रांच, सिलेक्ट रोल, सिलेक्ट द विनर, एंटर अवार्ड नेम, enter the gift item, enter the cash prize, enter the award reason, choose the date and then click on save. The new award is successfully created. You can see it in the award list. So here we complete all the features you got in Human Resource section. In the next video, we will explore academic section. So stay tuned, and if you have any queries, comment below. Thank you.